हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का माई इंग्लिश बुक 8 1.1 बी द बेस्ट वार्मिंग अप चिट चैट प्लस मार्जिनल क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। चिट चैट में ये सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन? तो आंसर है यस, आई गॉट अ प्राइज इन चेस कॉम्पिटिशन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? Answer, I feel very happy. Third question, have you ever failed in your efforts? Answer, yes, once I got poor marks in the test. Question 4, do you think we should accept success as well as failure? Answer, yes, we should accept. Question 5, what will be your reaction if you are not selected in a team? Answer, I will feel disappointed, but I will work hard again. Question first है A. Read aloud the following sets of words. ये जो सेट दिए हैं वर्ड का उनको हमें जोर से रीड करना है बस। सेकंड क्वेश्चन है B. Rearrange each of above set of words according to the increasing order of their size growth. साइज और ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट कैसे आएगी? स्ट्रीम, रिवर, सी, ओशन। ओके, साइज और ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बी में कैसे आएगा? देखो, स्टोन, रॉक, हिल और माउंटेन। सी में इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगी सीड, सैपलिंग, प्लांट एंड ट्री। डी में बेबी, चाइल्ड, यूथ एंड Question 2. In your pre-primary classes, you must have learned the story of the lion and the mouse. Read it in English and in the gaps using word given in the box. तो इस स्टोरी को हमें गैप्स में जो वर्ड फिल करने हैं वो नीचे बिलो येलो लाइन पे दिए गए हैं, वो वर्ड हमें वहां पे फिल करने हैं प्रॉपर लाइन में। तो फर्स्ट क्या आएगा? अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट, अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम. The lion got up angrily. He catch the mouse and was ready to kill it. The mouse begged the lion to leave it and said that same day it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day the lion was catched in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse heard the lions and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion. Okay? और moral of the story क्या आएगा? A friend in need is a friend indeed.